ऐसे नारेबाजी करने से सदन नहीं चलेगा जी। कृपा करके आप सब लोग अपना आसन पे बैठ जाइए। आपका सभी विषय के ऊपर सदन में चर्चा होगा, सदन में चर्चा होगा सभी विषय। कृपा करके आप सब लोग बैठ जाइए, कृपा करके आप सब लोग बैठ जाइए। देश में कई सारे जगह पर, कई सारे प्रदेशों में बाढ़ का बड़ा समस्या है, उसके ऊपर चर्चा कीजिए। बाढ़ का समस्या है, लोग भुगत रहे हैं, उसके ऊपर चर्चा कीजिए। प्लीज कृपा करके आप सब लोग बैठ जाइए प्लीज। ऐसा नहीं है, आज पहला दिन है मानसून सेशन का, आज का दिन आप सब लोग सहयोग कीजिए प्लीज, आप सब लोग सहयोग कीजिए। पहला दिन है, देश के जनता को एक अच्छा मैसेज दीजिए। सदन सहमति से चलता है, सदन आपको भी सुनेगा, सबका सुनेगा। प्लीज आप अपने आसन पर जाके विराज कीजिए प्लीज प्लीज। नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। अगर आप सदन नहीं चलाना चाहते, सदन नहीं चलाना चाहते, ये रवैया ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये आपका जो व्यवहार है ये ठीक नहीं है। कृपा करके आप बैठ जाइए। आप सदन नहीं चलाना चाहते, सदन नहीं चलाना चाहते, सदन की कार्रवाई 12:30 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। వర్షాకాల సమావేశాలు ప్రారంభమయ్యాయి. వాయిదా తర్వాత మళ్ళీ 12:30కి వాయిదా పడింది. అదేవిధంగా కొనసాగుతున్న వాయిదా తర్వాత మళ్ళీ ప్రారంభమైన లోక్సభ 12:30 లోక్సభ వాయిదా పడినట్టుగా తెలుస్తోంది. పార్లమెంట్ వర్షాకాల సమావేశాలు ప్రారంభమయ్యాయి. 12:30 వాయిదా కూడా పడినట్టుగా తెలుస్తున్నాయి లోక్సభ సమావేశాలు. పార్లమెంటు వర్షాకాల సమావేశాలు ప్రారంభమయ్యాయి. విపక్షాల ఆందోళన కారణంగా మళ్ళీ 12:30 లోక్సభ వాయిదా పడినట్టుగా తెలుస్తోంది. मेरे आवाज मेरे कानों में जंतर मंतर से वंदे मातरम का गूंज उठ रही है। इन खिलाफ जिंदाबाद की आवाज मेरे कानों में आ रही है और हवा में क्रांति की खुशबू आ रही है, तो बहुत अच्छी बात है। रास्ता दिख रही है, डेमोक्रेसी जिंदा है, दिल धड़क रहा है। देखेंगे अब क्या होगा। वहां राम जी का लूट मच रही है। नीट एग्जाम में आत्महत्या चल रहे हैं बच्चों का। वांचुक को गिरफ्तार करके अंदर रहे धर्मेंद्र प्रधान को पार्लियामेंट में रखे, तो हाउस कैसा चलेगा और मॉनसून क्यों बरसेगा। इतना पाप कर चुकी है ये सरकार
कि देश को भुगतना पड़ रहा है मानसून की कमी। ये सरकार नहीं, अहंकार है। और जो श्रद्धांजलि में भेदभाव करते हो, जब लाखों लाख और करोड़ों लोग और करोड़ों परिवार इस आंदोलन से जुड़े हों, जिन बच्चों की जान गई, उनके प्रति एक शब्द नहीं, श्रद्धांजलि तक नहीं, इससे बड़ा अहंकार क्या हो सकता है सरकार को। और जब बच्चे यहाँ आए हैं, छात्र, नौजवान, युवा जब यहाँ आए हैं और वो चाहते हैं सरकार कोई सुने, सरकार में अहंकार कितना कि सुनना भी नहीं चाहती है। सुनना तो दूर, अगर वो लोकसभा यहाँ तक आना चाहें अपनी बात कहने, तो लाठी और जो अन्याय कर सकते हैं, जो प्रताड़ना दे सकते हैं, वो दे रहे हैं। सरकार ऐसी ही है। और सरकार के अगर पन्ने पलटें, एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार यूपी में थी, 1 साल का मेडिकल का कोर्स 0 हो गया था, सेशन 0 हो गया था। ये बीजेपी के लोग आज से नहीं घोटाला कर रहे हैं, इनकी हमेशा ये कोशिश रहती है घोटाला कर लें। और पेपर लीक में जितने लोग शामिल होते हैं वो भाजपा ही हैं। यूपी में बाकायदा ऑडिट किया हम लोगों ने। This exam system. How to improve this exam system? How to stop this leakage on examination? How to retain the credibility of the examination system? There should be a thorough discussion on that. There should be an action that. Dharmendra Pradhan is the cold, responsible guy. This government is totally insensitive on that. The government is not ready for a discussion. Speaker is not allowing us to speak on the issue. Okay, you can understand. You speak 1 or 2, 3 minutes. They are not ready to hear the issue. NEET is not an issue. CBSE leakage is not an issue. Number 2, Chanda Chori. Chanda Chori, that is also hurting the complete believers of Lord Rama. People are completely pained. What is happening there? That trustee is nominated by Government of India under the supervision of Prime Minister. Entire trustee is responsible for this Chanda Chori. That's also government is not allowing for a discussion. Therefore, government is very much uncomfortable for discussing either Chanda Chori or NEET CBSE exam leakage, because they are on back foot completely. But they should. This Parliament is the place where debate and discussion has to happen. People are elected for debating these issues. The government is not ready for a debate at all. They are not allowing to speak on 2 minutes on NEET CBSE exam leak. They are not allowing us to speak on this issue. I don't know. We don't know why they call the Parliament. These are the very much bigger issues of the people of this country. They are not ready. Our minimum demand is to there should have a proper design discussion on these 2 subjects immediately. This is what our demand. Government is not ready. You people are this only. If whether you are agreeing or this issue or I am not going to fall in your agendas. Every political party will have their own decisions. Our position aim is to discuss these 2 major issues: CBSE, NEET, exam leakage. Number 2, Chanda Chori. Discuss. They have the majority in the house. Why they are worrying about the discussion? Rahul Gandhi and you also going to hospital to meet Sonam Wangchuk and That party will decide. That also you have to understand. A person combat में for a genuine cause, sitting for hunger strike for 20 days, this government should show some sensitivity. Human lives are important for everybody, and issues are also that much important. What you are doing? You are using the police, you are using Delhi police, and you are using CRPF to stop this type of agitations. You are in a different world, I don't know. This government is in a different world. Nobody can correct them. all the India bloc parties against the delimitation bill. Now the delimitation bill is not come. Let it come, and you can see that whether everybody together or not. Last session also you saw that. Thank you, sir. Thank you, sir. Sir.
ట్రైనీ ఐపీఎస్ అధికారి ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డిపై నేషనల్ పోలీస్ అకాడమీ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఆయనను తక్షణమే సస్పెండ్ చేస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేస్తుంది.